Hello guys, welcome to my channel Science Learning Gateway. I hope you all are doing good. So today in this video we are going to talk about the third day of Navratri. Which goddess is worshipped on the third day of Navratri? जैसा कि आप सब जानते ही हो कि 9 दिनों के नवरात्रि के इस फेस्टिवल में दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड डे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड डे ऑफ नवरात्रि. दैट विच गॉडेस इज वर्शिप्ड ऑन द थर्ड डे ऑफ नवरात्रि. तो तीसरे दिन दुर्गा नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी ऑफ माँ चंद्रघंटा. हु वाज शी? The third day of Navratri of goddess the third day of Navratri is of goddess Chandraghanta. She is the first 10-armed goddess with a crescent moon on her forehead, which gives her the name Chandraghanta. She rides on a tiger to destroy all evil and wicked. नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की उपासना का विधान है. विद्वानों का मानना है कि माँ चंद्रघंटा का रूप परम परम कल्याणकारी और शांतिदायक है. उनके मस्तक पर घंट के आकार का आधा चांद मौजूद है. इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है. गले में सफ़ेद फूलों की माला धारण किए देवी दुर्गा की शक्ति का यह रूप बाघ पर सवार रहती है. ऐसा माना जाता है कि देवी श्रद्धालुओं को की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अलौकिक ज्ञान प्रदान करती है. भय से मुक्ति दिलाने में भी माँ चंद्रघंटा की उपासना लाभप्रद मानी गई है. The third day of Navratri is signified by the peace, calm, and purity. It is dedicated to Ma Chandraghanta, who is also believed to be the Shakti of Lord Shiva. Ma Chandraghanta is also referred to as the married form of Devi Parvati. She is known to protect her devotees from all type of evil spirits and has a half moon shaped like a temple bell sitting on her forehead. Now, we are going to discuss about the history and origin of Ma Chandraghanta. Ma Chandraghanta was known as Devi Sati in her previous birth. In this incarnation, she was married to Lord Shiva and even sacrificed her life when her father insulted him. She was then born again a Parvati, the daughter of mountains, and observed severe penance to marry Lord Shiva. Due to her continued dedication, she came to known as Ma Brahmacharini, and Lord Shiva agreed to marry her. The marriage preparation were in full swing and everyone was happy for Lord Shiva and Ma Parvati. However, on the day of her marriage, Lord Shiva arrived with a huge, strange marriage procession. Ghosts, sages, goblins, ghouls, argories, and ascetics all were part of his unusual marriage procession. Lord Shiva himself had multiple snakes around his neck, and his whole body was smeared with ash. Moreover, Lord Shiva had snakes in his hair too, which gave him a scary and horrifying look. Ma Parvati's relatives were left shocked upon seeing such a terrifying form of Lord Shiva, and almost everyone fainted out of pure terror. Ma Parvati got worried and feared that her family and Lord Shiva would be highly embarrassed because of this situation. So she immediately transformed herself into a terrorizing avatar, Chandraghanta. This was a frightening sight and she looked as terrifying as Lord Shiva. Ma Chandraghanta's complexion turned golden and now had 10 arms. She used her 10 arms to bless her devotees, while the other 9 arms carried a specific object or weapon. She carried a trishul with 2 hands and a kamandala in another hand. Also, Ma Chandraghanta carried a gada, a bow, a arrow, a sword, a ghanta, and a kamla. In this terrifying form, Ma Chandraghanta approached Lord Shiva and convinced him to take a noble form. Lord Shiva agreed and transformed himself into a handsome prince. Also, he was now bedecked with beautiful jewels and ornaments. Finally, Lord Shiva and Ma Parvati's marriage took place with all the prayers and rituals. Their marriage was celebrated all over the world and is observed today as Maha Shivratri. So this was all about Ma Chandraghanta's story. तो चलिए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा. पुराणों में जिस कथा का जिक्र है उसके मुताबिक देवलोक में जब असुरों का आंतरिक अधिक बढ़ गया तब देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया. उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था. ये दुत्कारी महेश देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था. स्वर्ग लोक पर राज करने की अपनी इच्छा को साकार करने हेतु वह तमाम तरीके अपनाता था. जब देवगुणों को उसकी यह इच्छा ज्ञात हुई तो चिंतित होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे. देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने के बाद तीनों
तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ। उन देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। वहीं शिव जी ने अपना त्रिशूल तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट किया। सबसे आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशालकाय रूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भांप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। बावजूद उसके असुरों ने मां चंद्रघंटा पर हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध में महिषासुर काल के ग्रास में समा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की स्टोरी। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो and if you liked it also, and if you like it, then please like it and share it with your friends also. Thank you for watching the channel Science Learning Gateway, and if you like this video, then please click on the like button and share with your friends also. And if you are new to my channel, then please subscribe to it. Thank you.